online mode as well as in English, Hindi, and Tamil languages. At the outset, I invite our director from School of Journalism and New Media Studies, Professor K.S. Arul, to give his welcome address. Professor Selvan, please. Honorable Vice Chancellor, sir, distinguished experts, directors, heads, regional directors, colleagues, students, and participants. I warmly welcome each one of you for this launch program. Postgraduate Diploma in Journalism and Mass Communication is the oldest program from the school. We are running this program for the last 20 years, and we have ventured into multiple languages. Last 2 years' time, the same program is being offered to Guyana students, as well as the program is part of the E-Vidya Bharati, through which the students are joined from 19 African countries. The old program, quite popular, synonymous with the IGNOU's journalism program, and based on the IGNOU's mandate to adopt the new technology as well as to reach unreached, we have adopted this technological platform online mode for this PGJMC, as well as we are going to offer this program in multiple regional languages. And this is part of master's program, and here we have modular structure, and my colleague Dr. Shikharai will give more details about the program. And this is the mandate along with the national education policy. And we are very fortunate to work under the guidance of our Honorable Vice Chancellor. And Sir is the chairperson for National Committee for creating textbook in bachelor's level program across the country. With his continuous support and guidance, we have converted many of our journalism program into regional languages. And along with that, based on the recent academic council decisions, the regional language programs we are offering in a promotional fee, which is applicable to our masters in journalism as well as in this particular postgraduate diploma program. The details will be given by the program coordinator later. And IGNOU is known for its quality content, and by the process of offering journalism courses in regional languages. And this is the university's biggest contribution to the respective languages. Availability of quality content in general in a book format, and particularly availability of books in a regional language is the biggest challenge in Indian context. University has taken a major decision in this process of offering quality content in the regional languages. And in tune with the major objective of this function, we have invited 3 eminent experts for this program. And Professor G. Ravindran is a known media academic and have worked extensively in a Tamil language-based journalism training in India and abroad. And Professor Anand Pradhan is a known figure in Hindi journalism training. And Professor Umesh Arya is known for his technical skills in utilizing the technology for media and communication training. On behalf of the university and school, I warmly welcome all the experts and all the participants in this program. Thank you. अब मैं वो इधर कर दूं, क्या वहां से हो सकता है? हाँ, हो जाएगा। अब इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिखा राय जी को आमंत्रित करता हूं। वो इस विषय पर, इस प्रोग्राम पर पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पर एक संक्षिप्त और विस्तृत जानकारी देंगे। लॉन्च वाला है ना जी, आपके भाषण के बाद करा दीजिए जी, उससे ये फायदा वो लोग समझ जाएंगे क्या कंटेंट है, बोलने में सुविधा है जी, एंड में कोई मतलब जी, तो मेरे बाद लॉन्च हो जाएगा ठीक है, बाकी लोगों को बोलने में सुविधा है जी जी बिल्कुल।
PGJMC was launched keeping in mind the importance that media enjoys in society today. Media and technology makes it easier for people to connect with each other. It offers professional career opportunities like field reporter, editor, writer, correspondent, and in-studio anchors, researchers, and program makers. Many professionals also work in fields like production, camera, editing, graphics, program research, and script writing. Also, with the coming of NEP 2020, the focus has been on skill development as well as education in regional languages. Keeping all these things in mind, the School of Journalism has launched the postgraduate diploma program in journalism and mass communication, not only in the online mode so that people, not just in India, but also abroad can join it, but it is also keeping in mind that the goals of skill development and regional language education be met. This program is of 36 credits. It contains 6 theory courses and 2 practical courses. The 6 theory courses are of 4 credits each, and the 2 practical courses are of 6 credits each. And this program is supposed to offer a glimpse of what mass communication is all about its various disciplines, and how one can formulate not only a career for oneself, but can also end up becoming an entrepreneur in the field. With that, I give over again to Ramesh ji. थैंक यू डॉक्टर शिक्षा जी। यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और खास तौर से पत्रकारिता विद्यापीठ के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि 2020 से लेकर के और आज हम लोग जनवरी 2023 में, इस दौरान इस स्कूल ने 4 एमए प्रोग्राम और 5 डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च किया है। माननीय कुलपति इग्नू के लोकप्रिय और यशस्वी कुलपति प्रोफेसर नागेश्वर जी राव के कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन, सहयोग और प्रेरणा के तौर पर हम लोगों ने इतने 2-3 सालों में जो सक्रिय भूमिका अदा किया है स्कूल ने पूरे विश्वविद्यालय के स्तर पर, उसमें जो 115 प्रोग्राम विश्वविद्यालय ने लॉन्च किए हैं, उसमें हम लोगों की जो भागीदारी है वो 9 प्रोग्राम की है, डिप्लोमा और एमए प्रोग्राम को लेकर के। और आज हम लोग पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम को औपचारिक तौर पर लॉन्च करने के लिए वीडियो चल रहा है। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें।
अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में हमारे स्कूल पत्रकारिता विद्यापीठ के संस्थापक निदेशक आदरणीय प्रोफेसर शंभूनाथ जी को आमंत्रित करूंगा और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि भारतीय पत्रकारिता जगत में भारतीय भाषाओं में, जो इंडियन लैंग्वेजेस की बात हो रही है, भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता की जो वर्तमान और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उस पे अपना विचार रखें। प्रोफेसर शंभूनाथ जी। थैंक यू रमेश। आज का ये जो प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो ये कैसे दौर में लॉन्च कर रहे हैं, सारे डिप्लोमा प्रोग्राम हैं। ऐसे दौर में लॉन्च कर रहे हैं जब डिग्री का आग्रह बढ़ रहा है। तो डिग्री प्रोग्राम के बढ़ते हुए आग्रह के बीच में डिप्लोमा प्रोग्राम लॉन्च करने को लोग थोड़ा क्यूरियोसिटी से देख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ का जो डिप्लोमा प्रोग्राम है वो डायरेक्टली डिग्री से भी लिंक्ड है, इसलिए वो सिर्फ डिप्लोमा नहीं है, वो डिग्री का एक पार्ट भी है। तो जो इग्नू का बेसिक मोटो है फ्लेक्सी लर्निंग, उसमें ये ठीक से फिट होता है। मतलब आपको एग्जिट करने के लिए भी साल भर बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है डिपेंडिंग से, और अगर आप और फर्दर ये करना चाहते हैं और एक साल बिताना चाहते हैं प्रोग्राम के साथ, तो फिर यू आर इंटाइटल्ड फॉर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। ये फ्लेक्सी लर्निंग मॉड्यूल की विशेषता है और हम लोग विशेषता को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इसीलिए ये जो डिप्लोमा हमारा है वो नॉर्मल डिप्लोमा नहीं, इट्स पार्ट ऑफ डिग्री प्रोग्राम। तो इस तौर पे ये डिप्लोमा थोड़ा सा डिफरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, डिप्लोमा को टारगेट किया गया है इस तौर पे कि अगर एक साल आप इस प्रोग्राम के साथ रहते हैं, प्रोफेशनली यू विल बी कॉम्पिटेंट इनफ टू टैकल दिस प्रोफेशन ऑफ लर्निंग। ये इसका जो फोकस एरिया है, फोकल एरिया है, वो प्रोफेशनलिज्म है। और आनंद जी बैठे हैं साथ में, ये तो जिस संस्थान में काम करते हैं वो संस्थान डिप्लोमा पे ही सरवाइव कर रहा है, वो एक भी डिग्री प्रोग्राम लॉन्च नहीं करता, लेकिन वो इतने लंबे समय से सिर्फ अपने डिप्लोमा प्रोग्राम के आधार पे देश का सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट बना हुआ है। और अगर आप IIMs की तरफ देखें तो जो IIM के इंस्टीट्यूट है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ही वही डिग्री देते हैं। अभी शायद कुछ उसमें ये हुआ है, कोई डिग्री वगैरह का है, लंबे समय तक वो डिप्लोमा पे ही सरवाइव किया और मतलब मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। तो इसलिए हमारा जो डिप्लोमा है वो प्रोफेशनलिज्म को टारगेट किए हुआ है। बाकी क्योंकि इसमें लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस है, डिप्लोमा हम लोगों के यहाँ जब शुरू हुआ था तो ये इंग्लिश मीडियम में, अभी ये हिंदी और तमिल में लॉन्च हो रहा है, तो उसके बाद और भी भारतीय भाषाओं में हम इसको लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो दूसरा इम्पोर्टेंट पक्ष है वो भारतीय भाषाओं में इसका उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि जो लोग जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं वो इस बात से वाकिफ है कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो इंडियन लैंग्वेज से ये है, उससे बहुत ज़्यादा उसका शेयर बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि IRS NRS के जो सर्वे आते रहे हैं, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो उसमें सिर्फ एक अखबार अंग्रेजी का दिखाई पड़ता था, टाइम्स ऑफ इंडिया, बाकी सारे भारतीय भाषाओं के अखबार ही थे टॉप 10। हिंदी लगभग 50% के आसपास थी, बाकी तमिल का अखबार था, मराठी का अखबार है, मलयालम का अखबार है, ये भारतीय भाषाओं के अखबार उसमें ज़्यादा है। तो अगर इंडस्ट्री की ये सिचुएशन है उसमें भारतीय भाषाओं
का जो मामला है वो सबसे ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है जो विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम बनते हैं उनको भी उसी इंडस्ट्री वाले तर्ज पे उनको भी उसमें ट्रेन लोग निकालने चाहिए जो लैंग्वेज जर्नलिज्म में जाके बेहतर काम कर सके। नॉर्मली अपने यहाँ होता था लैंग्वेजेस में बहुत कम जर्नलिज्म के प्रोग्राम बहुत कम अवेलेबल, ज्यादातर अंग्रेजी में अवेलेबल, जबकि मार्केट शेयर अंग्रेजी का बहुत कम है। तो ये आयरनिकल सिचुएशन है। मेरा ख्याल है मैं इनसे अपने यहाँ प्रोफेसर अरुण से बात कर रहा था जब हम लोग ये तमिल में इसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, अपने एमए भी तमिल में लॉन्च किया। तो हमने इनसे पूछा कि तमिल लैंग्वेज में कोई एमए का प्रोग्राम चलता है क्या, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्राम एमए में नहीं चलता। मेरा ख्याल है रविंद्र जी तो जुड़े रहे हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक रहे, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में है, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि तमिल में कोई डिग्री प्रोग्राम मद्रास यूनिवर्सिटी चलाती है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु चलाती है कि नहीं। मुझे लगता है शायद नहीं चलाती। तो लैंग्वेज जर्नलिज्म अगर प्रोमिनेंट है इस देश में, तो लैंग्वेज जर्नलिज्म की टीचिंग क्यों प्रोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज को एड्रेस करते हुए हम लोगों ने लैंग्वेज पे फोकस किया है और जर्नलिज्म के जितने भी पाठ्यक्रम gone into freeze. सभी लैंग्वेज पे उनको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ये इसका दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष ये है कि उसको ऑनलाइन अवेलेबल कराना। आप मतलब हमारे पास रीडिंग मटेरियल वगैरह वो सब है, लेकिन ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म है। तो ये इसकी तीसरी विशेषता हुई कि हम लोग इसको लैंग्वेज में लॉन्च कर रहे हैं और प्लस प्लेटफॉर्म के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं ताकि इसका जो कैरेक्टर है वो यूनिवर्सल हो जाए। हम लोगों के यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, उन सारे कॉन्टिनेंट से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनकी क्वेरीज आ रही हैं, उनका एनरोलमेंट आ रहा है। तो इस तौर पे इस डिप्लोमा प्रोग्राम का जो यूनिवर्स है वो ग्लोबल है। तो ये एक इसकी तीसरी विशेषता है। मेरा ख्याल है इन तीन विशेषताओं के साथ अगर हम लोग इसको ठीक से इन प्रोग्राम्स को जमा ले गए, एक माइलस्टोन होगा इग्नू के इसमें भी, इग्नू के पोर्टफोलियो में भी, और हम लोगों के लिए भी ये स्कूल ये अचीवमेंट होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और इन डिप्लोमा प्रोग्राम के जो हमारे स्कूल के कोऑर्डिनेटर हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। शिखा जी लंबे समय से इसको देख रही हैं, रमेश जी भी देख रहे हैं, पद्मिनी भी देख रही हैं, सब लोग जो देख रहे हैं इनको इस बात के लिए बधाई। इनका प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है और लैंग्वेजेज में जा रहा है। इसी बात के साथ मैं अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब को सुनना चाहेंगे। उनको सुनते रहते हैं हम लोग, उनसे मार्गदर्शन पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्कूल वाइब्रेंट हुआ है। सर और रमेश एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए। सारे एक्सपर्ट तो मीडिया के ही हैं। मेरा ख्याल है ये उमेश के साथ भी हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ है जी काफी। उमेश भी जर्नलिज्म के प्रोफेसर हैं। संजय जी हैं, संजय जी तो हमारे पार्ट ही रहे हैं, अपने यहाँ यूनिवर्सिटी में रहे हैं। उन्होंने ज्वाइन किया है क्योंकि ये प्रोग्राम हो रहा था। हमारे गेस्ट स्पीकर्स आनंद जी और रविंद्र जी। अच्छा, ये संजय नहीं है? नहीं। कहाँ है संजय? नहीं है, प्रोग्राम के साथ नहीं है। No, not associated with the program. Okay, but he is joining our program. Okay. So it is time for us to listen to the deep insights of our guest speakers. I'd like to invite Professor Umesh Arya first. He is the Dean and former Head Faculty of Media Studies with the Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar. He is a media teacher and a corporate trainer, and he has over 40 publications in national and international journals. And today he will share his insights on technology-laden media education. Professor Arya. Yeah, respected Vice Chancellor, sir, and all dear friends, thank inviting me here, though I should come in the last because Anandji and Ravindraji, they are senior to me, I think. So, but I'm so humbled by this. I think I'm audible, Shikha. Is it okay? Audible, visible? Huh? yes, it's audible. Okay, right.
So at the outset, I would like to congratulate for launching this very timely courses. Timely in the sense because these are in the vernacular languages, and it's just the start, as described by Shamunaji, that regional languages, they are the biggest beneficial of all these courses according to the inspiration from the NEP. So I used to ponder over a small code which my professor told me almost 32 years back during our times. He used to believe that the mass communication is literature, right? At that time it was literature based, but now if you talk about mass communication, so it's all technology based, right? So see, what is the aspect which is not covered by the technology these days? You leave the communication aside, so many other courses. I mean, everything is technological, right? So it's up to us then what definition of the technology we are adopting for this, because if we are talking about the online courses that you have launched, so I mean, this is the biggest feat that people from far off places, they are able to do these courses. But again, as far as NEP is concerned, the scope of the technology means that all these uh, courses which were available in English, now they have been available in various regional languages. So that is also one of the definition of the technology. So your course and the coming regional version of the course is perfectly a embodiment of the technology. And as far as regional languages are concerned, so I am reminded of my training in Google recently, not recently but in 2017. So we were trained primarily in English, right? After that, the dex means the material which Google provided us for training people around, journalists around. It used to, they got it translated into every possible Indian language, right? And if you search on YouTube, uh, the tier 2 cities, tier 3 cities, they are coming up like anything as far as the viewership is concerned. And these are the cities, villages, small kasbas, where people like to see the content in the regional language. So I mean, that's a power of technology, that regional languages, they are witnessing another renaissance. And the things were lost in the hype of the technology as far as last 2 decades are concerned, but things are improving now. So having said that, I'm reminded of one very good sentence as far as psychology notes of IGNOU are concerned. I was looking at them, somehow. So there was a very beautiful sentence that initial knowledge in any field is the result of reactions and counter reactions rather than the research studies or out of the context research studies. So yeah, so that sentence was very good, and it just it became as a memory in my mind, so that I'm putting that here. So as far as the technology is concerned, so the same is happening right now, right? Because most of the technology which we use in media is Western technologies, right? So with the advent of the local technologies, local applications of media, regional languages, vernacular kind of thing, so we may hope to see some new homegrown media technology applications. And that's the thing, because as far as technology is concerned, it has got its own agenda whenever it comes with certain algorithms, certain opinions embedded in them. So a particular agenda it has to achieve, and when the agenda is Western based, so then local things, vernacular things, they are going to suffer. But I'm very happy now that things are moving in another direction. So as regards technology, we are now quite used to ChatGPT and other AI applications these days. And
as far as the essay making, notes taking, everything is concerned. So you can just enter something and chat GPT will reply instantly. But again, that's also a good application. Recently I was reading in some media journals that okay, it's a threat to the research, threat to education, every kind of scholarship it is proving a threat to, but it's not that. And we hope to see very good new applications out of the disruptive programs, disruptive applications like chat GPT. At least it can be used for summing up the things, and human gray matter can be put to a very focused use as far as the technology is concerned. And another thing is that we are preparing journalists, right? So journalists, they are sometimes referred as generalists. I mean, they talk about general things, right? So again, that's an old notion. 20 years back, yeah, it used to be identified with the literature and the traditional part of the thing. But of late, we are seeing the micro specialization even in the journalism. So I'm very sure that the media applications which help you to zero in a particular aspect of the information, and you tend to have more broader outlook of that particular thing. So recently we have been delivering many workshops throughout India on data dialogue and data related pedagogy. So data is also it's another oil that people they are very used to refer this phrase as. But yeah, 30 years back, all the top companies in the world, they were oil companies, right? And right now, all the top companies, 5 or 6 or maybe more, they are data companies: Amazon, Google, Apple, etc. So nevertheless, media applications, they are composed of the data. And I was referring to the micro specialization, micro work. So we have to work on the data in the micro part, and I'm very sure that that the courses like this, they will make use of the technology, and they will be having ingredients of the new technologies like data journalism, either directly or indirectly. And the media technology will ensure that our students, they are passing out with the latest qualification as far as new media technologies are concerned. So with this, I will like to hand over to Shamunaji. Thank you so much. Thank you. Thank you. धन्यवाद प्रोफेसर आर्या। अब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान के लोकप्रिय प्रोफेसर, जनवादी, बुद्धिजीवी और विख्यात स्तंभकार प्रोफेसर आनंद जी प्रधान को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आप खास तौर से हिंदी पत्रकारिता और भारतीय जनसंचार संस्थान से एसोसिएटेड होने की वजह से भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने विधा में, अपने प्रोफेशन में ब्रांड बन जाते हैं। तो प्रोफेसर आनंद जी प्रधान एक तरह से मतलब मीडिया एजुकेशन के लिए एक ब्रांड है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर प्रधान जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर रमेश जी। सबसे पहले मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नागेश्वर राव को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनकी अगुवाई में आज पत्रकारिता विद्यापीठ यह पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है, और खास करके ऑनलाइन माध्यम में। और उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि अंग्रेजी के साथ साथ वो हिंदी और दूसरी जो भारत की एक तरह से शास्त्रीय भाषा है तमिल, उसमें शुरू हो रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, आपकी पूरी टीम को, प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह, प्रोफेसर अरुल सेल्वम, शिखा जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
आज का दिन बहुत ही एक मायने में आपने 30 जनवरी को ये कार्यक्रम रखा है और गांधी जी न सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में थे, विचारक थे, बल्कि वो एक बेहतरीन पत्रकार भी थे। और उनकी पत्रकारिता में उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में और खास करके हिंदी में जिस तरह से पत्रकारिता को आगे बढ़ाया, तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि भी नहीं हो सकती थी कि आप उस दिन इस पाठ्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनसंचार संस्थान में हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम भी चलते हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई बार प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही साथ आर्म फोर्सेस के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उन सब लोगों की हम ट्रेनिंग करते हैं। और जो अक्सर इन दिनों मैं शिकायत सुनता हूं उन लोगों से कि लगभग देश के हर शहर में, हर छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जहां भी, अगर वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, वहां पर सैकड़ों पत्रकार हैं जो अलग अलग एक तरह से अखबारों के, टेलीविजन चैनलों के, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं। और उसमें से 95% स्ट्रिंगर्स हैं। और उनकी सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनको कुछ पता नहीं रहता है, वो हमें बहुत परेशान करते हैं। उनको कोई एक तरह से पत्रकारिता के एथिक्स के बारे में पता नहीं है, पत्रकारिता के कानून के बारे में पता नहीं है, और वो सब लोग पत्रकार बन गए हैं और उन्हें बहुत झुंझलाहट होती है। मुझे लगता है कि आज इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय जो ये पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है, खास करके इस तरह के स्ट्रिंगर्स के लिए, जो हमारे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में काम कर रहे हैं और जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में पत्रकारिता के सामने जो बहुत सारी समस्याएं और चुनौतियां हैं, उसमें से एक प्रमुख समस्या के रूप में वो चिन्हित करती है कि ट्रेनिंग की कमी, ट्रेनिंग का अभाव और एक तरह से ट्रेन्ड पत्रकारों का न होना। आप, ये बात सही है कि हमारे देश के जो राज्यों की राजधानियां हैं, दिल्ली है, उसमें ज्यादातर लोग अब विभिन्न विश्वविद्यालयों से, ट्रेनिंग संस्थानों से प्रशिक्षित पत्रकार हैं। अब ज्यादातर, पहले तो ये भी कहा जाता था कि पत्रकार को ट्रेन नहीं किया जा सकता, वो बॉर्न होते हैं, वो पैदाइशी होते हैं, उनको कोई बनाया नहीं जा सकता, किसी यूनिवर्सिटी में उनको गढ़ा नहीं जा सकता। बहुत पुराने समय के पत्रकार ये कहा करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अब एक तरह से प्रशिक्षित पत्रकारों की संख्या मीडिया में बढ़ रही है। उस समय हमारे देश के बड़े हिस्से में ऐसे पत्रकार जो कहीं से प्रशिक्षित नहीं हैं, उनके लिए मैं समझता हूं आप एक बहुत बड़ा मौका लेकर के आए हैं। और उनके लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम, खास करके जिस तरह से हमने देखा कि महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा का जिस तरह से विस्तार हुआ है, और इग्नू ने एक लीडरशिप भूमिका जो उसकी है, और असली ब्रांड तो मैं समझता हूं रमेश जी, इग्नू है देश में, और आपका विद्यापीठ है जो लाखों लाख विद्यार्थियों तक पहुंच रहा है। तो उन तक पहुंचने का मैं समझता हूं सबसे बेहतरीन माध्यम आपने चुना है ऑनलाइन पाठ्यक्रम, और इस रूप में मैं इस पाठ्यक्रम का स्वागत करता हूं। जैसा शिखा जी ने बताया कि इसका दूसरा एक उन्होंने इसमें फोकस किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जाए। मैं समझता हूं कि एक तरफ भारत सरकार भी कह रही है कि लोगों में उद्यमिता को बढ़ाया जाए, और पत्रकारिता में और जनसंचार में उद्यमिता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूं हमारे संस्थान के बहुत सारे विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थी अपना एक समूह बना करके वो डिजिटल वेंचर्स लॉन्च कर रहे हैं, और डिजिटल ने ऐसा मौका उपलब्ध कराया है कि नए वेंचर शुरू किए जा सकते हैं पत्रकारिता और जनसंचार के। और खास करके पत्रकारिता में जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, एक तरह से विकेंद्रीकरण हो रहा है, छोटे छोटे स्तर पर पत्रकारिता जा रही है, जिला स्तर पर जा रही है, कस्बे के स्तर पर जा रही है, नीश स्तर पर जा रही है, अलग अलग चीजों की रिपोर्टिंग और अलग अलग तरह के कंटेंट की मांग बढ़ रही है। उस समय चाहे वो स्वास्थ्य पर हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट पर हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट पर हो, चाहे कृषि पर हो, इस तरह के विषयों पर भी पत्रकारिता शुरू करने का ऑप्शन मैं समझता हूं कि इससे खास करके डिजिटल में मिल रहा है।
उस समय अगर इस तरह के पाठ्यक्रम लोगों में उद्यमिता का, कि कैसे एक डिजिटल वेंचर को मैनेज किया जा सकता है, उसके फिनेंसेस को कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसमें उसको सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है, इस तरह की अगर ट्रेनिंग इसमें इनकॉर्पोरेट की जा सके तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा काम इग्नू और आपका विद्यापीठ करेगा, जो लोगों में उद्यमिता को बढ़ा सकेगा। तो ये दूसरी जो महत्वपूर्ण पहलकदमी है, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर भारतीय भाषाओं में, शंभुनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय भाषाओं में ही पत्रकारिता का विस्तार हो रहा है। जो हाल की IRS रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में पत्रकारिता लगभग एक तरह से अखबारों का और टेलीविजन चैनलों का कुल मिलाजुला करके एक पठार पर, प्लेट्यू पर पहुंच गई है। अब उससे ज्यादा उसका विस्तार या विकास नहीं हो रहा है। जो विस्तार और विकास है वो भारतीय भाषाओं में है। खास करके ग्रामीण इलाकों में जहां अखबार नहीं पहुंचते थे, धीरे धीरे अखबार अब वहां पहुंच रहे हैं। संचार के साधनों के विस्तार के साथ, एक्सप्रेसवेज के बनने के साथ, अब सुबह सुबह अखबार मेरे गांव में, जो कि बनारस से करीब 90-100 किलोमीटर की दूर पर है, सुबह 6 बजे अखबार गांव पर आ जाता है। तो ये एक तरह से अखबार अब गांव की तरफ पेनिट्रेट कर रहे हैं, गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। ये एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, एक नई संभावना क्रिएट कर रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से लोगों के हाथ में मोबाइल फोन पहुंच गया है, सबके हाथों में है, जिस तरह से डाटा चीप हुआ है, उसमें जिस तरह से खास करके वीडियो का कंजम्पशन बढ़ा है, इन सब पहलुओं पर आप ध्यान दे रहे हैं। और ये पाठ्यक्रम मैं समझता हूं कि एक नए तरह का लोगों को टूल्स देगा, टेक्निक देगा, और वो अपने को न सिर्फ प्रशिक्षित कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के मामले में, राइटिंग के मामले में, बल्कि उसके एथिक्स के बारे में भी, उसके कानूनों के बारे में भी, ताकि जो हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी एक प्रशिक्षित पत्रकार से उनका इंटरैक्शन हो सके। तो इन सब पहलुओं पर आप ध्यान दे रहे हैं। आज का दिन कोई भाषण देने का दिन नहीं है। मैं समझता हूं कि आज का दिन एक तरह से आपके इस पाठ्यक्रम को आप शुरू कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट करने का, उसका स्वागत करने का दिन है। और मैं अपनी तरफ से और देश के उन लाखों विद्यार्थियों की तरफ से और उन स्ट्रिंगर्स की तरफ से खास करके मैं समझता हूं, जिनके लिए ये कार्यक्रम एक तरह से उनको, जो वो काम कर रहे हैं फील्ड में, उनको एक डिप्लोमा भी मिल जाएगा। तो उनको कई बार बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब स्थानीय स्तर पर, तहसील के स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं, पर एक डिप्लोमा मिलने के बाद उनके भी आगे बढ़ने की, तरक्की करने के रास्ते खुल सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इग्नू के माननीय कुलपति जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैसा कि आप सब कह रहे हैं कि उनकी डायनेमिक लीडरशिप में एक तरह से इस तरह के पाठ्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे और पाठ्यक्रमों की उम्मीद है आपकी तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आप इन अलग अलग पहलुओं पर, खास करके एंटरप्रेन्योरियल जर्नलिज्म पर एक सेपरेट पाठ्यक्रम भी आने वाले समय में शुरू करेंगे, जो, या डाटा जर्नलिज्म पर जिसकी तरफ प्रोफेसर उमेश आर्या इशारा कर रहे थे। इन सब नीश एरिया में भी आप आने वाले समय में पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया आपने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Professor Gopalan Ravindran is currently the head Department of Media and Mass Communication and Dean School of Communication with the Central University of Tamil Nadu. Before this, he was the professor and head with the Department of Journalism and Communication, University of Madras, Chennai from 2008 to 2020. He has also been the UGC Expert Committee member many a times, as well as member of selection boards of various universities. Today, he will enlighten us on the subject of media education in Indian language with special reference to Tamil. Professor Ravindran, please. Thank you. Thank you, Professor Vice Chancellor, Dr. Nageshwar Rao, my dear colleagues, Professor Shambhu and Professor Arul, and other colleagues in IGNOU. I thank the Vice Chancellor and my dear colleagues for this opportunity to share few thoughts on the topic given to me, that is media education in Indian language with special reference to
Tamil. Some of these thoughts are historical, some of these are contemporary. Let me congratulate Vice Chancellor Dr. Nageshwar Rao and his able team at IGNOU School of Journalism and New Media. Before I proceed further, congratulations, sir. Congratulations to all the dear colleagues at IGNOU. It is a pioneering attempt, in my opinion, as far as Tamil journalism is concerned and education related to the same. These are my thoughts, sir. I am currently working on research concerning what I call as the Adayar initiatives in journalism education in India, spanning a period of a century between 1917 and 2022. During the course of this research, I found few facts which helped the colleagues to rethink history of journalism education in India. The earliest attempt to import journalism education in India happened at the then National College of Commerce at Kilpauk, now a very posh area in Chennai, in 1917. And this was a part of the then National University at Adayar, Chennai, which was established by Dr. Annibesan, who was involved in our freedom struggle, to counter the move by Madras University to disaffiliate our college at Madanapalli, which saw frequent visits by Rabindranath Tagore. So she decided to have her own institution, and one of her plans was to offer a journalism course at the certificate level. And this was started in 1917, more than 100 years ago. And this course had one professor, Dr. Sanjeeva Rao, who had his BA in Canterbury. Now, what is the connection between this and today's event? Today's event is happening in 2022 on January 30th. We don't know the dates of the first journalism certificate program in India. We know the year. I'm trying to find the date, but I have a fairly good idea about what kind of program it was. It was modeled after the liberal arts education, and students had to work in the then newspapers, and they had to take few courses outside journalism. And what were these courses? Citizenship, religion, laws, which we no longer teach in journalism programs. We teach Indian Constitution, media ethics. We don't teach about religion. We don't teach about society and culture. I wish IGNOU's program in English, Hindi, and Tamil takes into account this liberal arts model. My second historical thought is, now I have given you a time period, 1917, 2022. Another time period we need to think about is India's earliest attempt in printing, though in the form of book, was in 1578. We know the history of the contributions of Portuguese missionaries when they landed in Goa and traveled through the Kerala coast and ended up on the Tamil Nadu coast. And one father, Portuguese father, who was born in 1520 and died in 1560, his name is Father Enriquez. He prints the first book in Tamil. He was fairly sure that their activities in India cannot proceed without understanding the local language and culture. Now, there is a lesson for us in India.
We are not missionaries here. We are not here to do something, but we are journalism educators. We are media educators. We are given the task of teaching journalism. And have we done that between 1917 and 2022 across the language matrix in India? That is my big question. I'm not sure about Hindi journalism and journalism education in Hindi and other languages. As far as Tamil is concerned, which is my topic, I can confidently say that we have missed the bus. Even though first printed Tamil book in Tamil was done by this person in 1578. Much water has flown, but only this year, Government of Tamil Nadu has started a program like IGNOU's program, a free model program in Tamil, with Tamil as a medium of instruction, a certificate course in journalism. I'm told that 100 students are studying that program. Before, when I was in University of Madras, I was seized with this issue. Why you have forgotten this idea of importing journalism education in Tamil? Even though we talk a lot about Tamil newspaper, Tamil journalist contributions, print culture in Tamil, we have not thought about offering a program in journalism in Tamil, with Tamil journalism as the focus. There are two sides to it. One is offering the program in Tamil as a medium of instruction. Another is offering a program with a focus on Tamil journalism in terms of what it is, how it is different from Hindi journalism, how it is different from Malayalam journalism, how it is different from Bengali journalism, how it is different from Urdu journalism or Odia journalism. I'm sure that IGNOU's program will take care of these two dimensions. One is the language of instruction. Another is the site itself, which is very different from other sites. All along, we have also problematized the relationship between vernacular journalism education with journalism education in general. Only taking into account the language, the medium of instruction. Because we never had a focus on the vernacular language practices in our many of our programs. In Tamil, we did not have a program, and IGNOU is pioneering this. I once again congratulate. On the other hand, while we were silent, the geniuses who pioneered practices in Tamil journalism, the great journalists, the newspaper owners, those who had an early start in rethinking journalism, such as now there is a successful newspaper in Tamil, probably you are aware. The name is Dinatandi. In English, it is Daily Tandi. Tandi is telegram. Roughly translated, it is Daily Telegraph. So this pioneer, his name is Adityanar. He studies Bharat law and comes back to India, starts this newspaper, modeled after the tabloid newspapers in UK. Now, we study Adityanar only in this way, but he was also a pioneer, the first person in vernacular journalism in India to come out with a style book, how the journalists should write, what style they should adopt, what are the terms to be avoided, terms to be preferred. Secondly, he also pioneered the appropriation of the native communication traditions given to us by the epics, like Ramayana, Mahabharata, and the local epics, Silappadigaram, Manimegala. So what is epic tradition in journalism in this case? Unlike other kinds of reporting or writing a journalist story, here, these journalists are trained to tell
newspaper stories in the epic mode. Story within a story, story within a story. So if you turn the story, it has subheadings. There are so many characters. It doesn't follow the inverted pyramid straight away. It completely debunks inverted pyramid style and invents a new style of reporting. That is a native, that is a style modeled after the Indian epic storytelling tradition. It looks at journalism as a site of storytelling. So there is a fictionalized approach to Tamil journalism. And we don't teach this in our classes because we don't have a program in Tamil journalism. So ours is a journalism program at the moment in many state and central universities, where we have modeled after the Western model of teaching journalism, without trying to link why a newspaper is so successful in India, whether it is Dainik Bhaskar or Dinakandi. They are successful in my hypothesis because they have succeeded in bridging the divide between the print culture of the West and print culture of the East. And the print culture of the East is a site where orality succeeds. We are members of oral culture, and we are also trying to survive with what came to us from the West as a cultural import, and that is print. I normally give this example of wedding card invitation. When we have a wedding of our children in our family, we print a wedding card. One of the first tasks is to print a wedding card. And one of the first tasks is to go with the wedding card to close relatives. Why we are printing and going in person? Going in person is part of oral cultural tradition. Our relatives would not come to the wedding if you are going to post the wedding card through mail or surface mail post or send it by WhatsApp. They would say this person doesn't know how to respect relationship. So there is this continuing tradition of print culture where we go in person with a printed wedding card. I think it is common across cultures in India. So this is what I call as a match and mismatch, or successful or unsuccessful coexistence of oral norms and print culture norms in the case of journalism. I'm sure that IGNOU's program will take into account all this and succeed in being a pioneer in that respect also. Not only in coming out with this program, but also succeed in being a model program so that the constituency benefits. At the moment, in Tamil Nadu, as far as journalism goes, journalism is a very fractured territory. In the sense, they claim to be professional. Our journalist colleagues claim to be professional because journalism is anyway considered as a trade-driven profession without any regulation in India. We have only anti-British era laws. So there are very serious ethical violations. I cannot claim to talk about the entire country, but I can claim to talk about what is happening in Tamil Nadu. So there are widespread violations of ethical practices. So we imported something like printing to India, but we are not in a position to exist with it in an ethical sense, in the Western ethical sense, or in the Eastern ethical sense. So there are professional practices, but these practices are not ethical. And this program by IGNOU can pioneer again in bridging this gap, in telling our journalist friends and also our students who would be future journalists, what is good for the society, what is good for the country, what is good for the audience, and what is more importantly good for journalism as an institution. We are not sure at the moment, in the wake of internet and mobile media, whether journalism of the print kind will survive in the same mode. All of us are rethinking about journalism's future. At this moment, IGNOU's program
can also help us in bridging this gap between professional practices within court and ethically grounded professional practices. And I thank once again Vice Chancellor, other colleagues in IGNOU for this opportunity to share my thoughts. I once again wish the program all success, and whatever I can do from my side, I will chip in. Thank you very much, everyone. Thank you. थैंक यू सो मच प्रोफेसर रविंद्रन जी। एक बहुत लोकप्रिय स्लोगन है कि शोक को संघर्ष में बदल दो, और यह मैं इसलिए याद कर रहा हूं कि 2020 अप्रैल से लेकर के और उसके बाद वर्षों तक न केवल विश्वविद्यालय, न केवल शिक्षण संस्थान, न केवल भारत, बल्कि दुनिया के स्तर पर कोविड के दौरान जिस तरह का माहौल था पूरा का पूरा, इस दौरान बहुत सारी अप्रिय घटनाएं हो रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो एजुकेशन मॉडल है हमारे विश्वविद्यालय का, उसको लेकर के छात्रों के बीच में राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा सक्रिय रहा और उपस्थित रहा। तो इस दौरान शोक के दौर भी आए और हम लोगों ने इसको संघर्ष में तब्दील किया। इसी का परिणाम है कि 2020 में हम लोगों ने पहला प्रोग्राम, स्कूल ने पहला प्रोग्राम एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लॉन्च किया, और इसका पहला जो डिप्लोमा प्रोग्राम है पहले साल का पीजीजीएमसी, जिसे हम लोग आज ऑनलाइन में लॉन्च कर रहे हैं, ये उसका रिवाइज वर्जन लॉन्च हुआ। उसके बाद जुलाई 2021 में 2 नए प्रोग्राम स्कूल ने लॉन्च किए, पीजी डिप्लोमा इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया। उसके बाद 2022 में स्कूल ने फिर से पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लॉन्च किया, और अभी जनवरी 2023 में स्कूल ने 3 नए एमए प्रोग्राम, एमए इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म, एमए इन जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एमए इन जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। इन सारे प्रोग्राम जो स्कूल ने लॉन्च किए, इसमें हमारे स्कूल के सर्वाधिक वरिष्ठ प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह जी का सहयोग, मार्गदर्शन साथ हमेशा मिला। और इस प्रोग्राम में जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर केएस अरुल सेल्वन, डॉक्टर शिखा राय, डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर पद्मिनी जैन, ये पूरी टीम थी जो इन कार्यक्रमों पर काम की। और ये सारे प्रोग्राम जो टोटल पहले हमने बताया कि हम लोगों ने 5 डिप्लोमा और 4 एमए प्रोग्राम लॉन्च किए। यह तब संभव हुआ जब 35 लाख छात्रों वाले इस विश्वविद्यालय, भारत के सर्वाधिक बड़े और दुनिया के सबसे बड़े विशाल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, आमतौर पर देखा जाता है कि एक व्यक्तित्व में, एक पर्सनालिटी में बहुत सारे कंपोजिशन देखने को नहीं मिलते, जो लिबरल भी हों, डेमोक्रेटिक भी हों, डायनेमिक भी हों, प्रोग्रेसिव भी हों। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बहुत विलक्षण लोगों में ही, विलक्षण व्यक्तित्व में ही देखने को मिलता है। तो ऐसे हमारे कुलपति, जन जन विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर नागेश्वर जी राव को मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलपति जी। Good noon to all of you. Honorable distinguished speakers, Professor Umesh Arya ji, Professor Anand Pradhan ji, Professor G. Ravindran ji, and my own colleagues of Indira Gandhi National Open University.
First of all, I welcome all the three distinguished speakers who have given lots of insights to us to look into our own program and try to see that how it can be made more and more learner-centric. The school deserves special appreciation and compliments for taking an initiative with respect to the postgraduate diploma in journalism and mass communication. And they have tried to have it in 3 languages. And maybe in the university as a whole, this particular school has got the distinction of launching these programs in a language after Hindi and English. These are the 2 popular languages which have been used till this point of time. Now, there is a 3rd language in which 2 programs they have already been developed and launched by the school, and they have become the leader to show the path to other schools that the teaching in mother tongue can further be strengthened if each one of us try to contribute in this endeavor. So for that, again, my special compliments to the school also. Going for a program in online, it has got its own advantages. It will reach to the home of the learners. No need to appear before the counseling sessions, because counseling sessions, they are offline counseling sessions in the ODL system. And for that, they have to reach to the centers, and there they have to interact with the teachers. But in case of online programs, they can have these counseling sessions at their home only. And the video tubes and videos and YouTubes, they can also be used to get that specific counseling sessions which are useful to all the learners. And in that direction also, the school is working a lot. And that is why this particular online program, it has been launched to reach to all corners of the country, even abroad also. As it has already been told that this particular program is also being included in the e-Vidya Bharati. No? Yes. It is already in the e-Vidya Bharati. E-Vidya Bharati is the Ministry of External Affairs initiative, wherein we are reaching to 19 African countries. And those 19 African countries for which the IGNOU was selected as the most important institution because of our affordable fees. And thereby, the 3,800 scholarships which are to be offered to those students in African countries, 2,700 scholarships they have been allotted to IGNOU itself. And remaining 24 institutions, they have been allotted remaining 1,000 scholarships. So maybe the quality concern, maybe the teaching learning process, maybe our learning materials and the videos, they help the Ministry of External Affairs to decide that the quality programs of IGNOU, they are to be offered to the African countries. And in this endeavor also, the School of Journalism and Mass Communication has come up with great zeal and enthusiasm. When I'm launching this particular PGJMC program in 3 languages, that is again a historical occasion, because earlier also either we are launching the programs in English or in Hindi or in Tamil also. But this time we are doing all the 3 in one stroke to reach to different sections of the society and also to reach to the people who are speaking different languages. If you look at the NEP, there the thrust is to have the teaching learning process in mother tongue. Of course, IGNOU has initiated this process of teaching in mother tongue from January 6, 2022 for their undergraduate programs, especially in the field of social sciences, the philosophy. The philosophy of teaching the subjects in mother tongue is that the learners, they can understand that language in a much more comfortable way. The sociology, the history, the public administration,
the economics, they all are now being telecast live in their mother tongues. 12 mother tongues they have been identified. And till now, we are having 3,000 videos through our Swayamprabha channels. So continuously, we are moving in that direction. And we are also trying to use that Swayamprabha channel, which is reaching to the doorsteps of every learners in our counseling sessions also. Because there is one specific advantage in that process, that even after this particular session, if any learner has missed it, the contents they are being sent through YouTube, and that can be used by the learner again whenever they require. So that is not available when we are having this offline counseling sessions, wherein the teacher and the learner, if they are not in contact at that particular point of time, they will miss that entire schedule and lecture, and they are not in a position to get the contents at a later stage. Because of this, the online programs, they are now becoming very, very popular all over the country, including the outside India also. Because when we look at our statistics with respect to the online programs, we find that almost all our online programs, they are widely being appreciated all over the globe. Till now, we have gone for 42 online programs, including MBA, MCA, and the journalism programs. And we see that Vidya Bharati has picked up, E-Vidya Bharati has picked up all the 41 programs for their E-Vidya Bharati scholarship scheme, Ministry of External Affairs. So wherever we are pushing those online programs, they are becoming very, very popular all over the globe, because Indian diaspora, they are there in almost all the countries of the world, and reaching to them through online, it has become an effective proposition, cheaper proposition, and affordable proposition also. And when they want to come back, and at that point of time, they are having the degree of Indian University. That is the additional advantage. In that case, they are also not supposed to appear in the examination by coming to India. So this is the additional advantage which we are having through our programs. Of course, in our country, the online regulations, they have been initiated in 2018 only. And thereafter, the refined online regulations, it has come up in 2020. So the pace of going for these new online programs, it was affected by the COVID also. But in our university, and also especially this particular school, they endeavored a lot, they worked a lot, and thereby they could bring all these programs within the framework in which they themselves have decided what to do and how they should progress each of these programs independently. Today, I feel happy and elevated when I see that my school is having an international brand, especially in the field of journalism. I know the pioneering contribution which the Shambhunath Singhji and other senior professors of this school, and your contributions being an expert in that area, they all have helped us to build that knowledge base, which is quite useful for all the people who are in the field of journalism. Because here, who are the working journalists, they can also go for it. Even the unemployed also, they can also go for these programs. We are having the certificate programs, we are having the diploma programs, we are having the postgraduate diploma programs, we are also having the PG programs. Further, there is one more advantage which the IGNOU is having, that if anyone wants to study only one course, one paper, that is also being permitted, like the Ministry of Education has got its programs in Swayam platform. So course-based registration scheme, it was popular since long. But recently what we have done is, when this national education policy has come up, we have started advertising those issues also clearly. And now some of the learners, those who want to study only one paper or only two papers, and proportionately that fees and also the examination fees that is being charged, and we are also certifying that credits which any individual can carry, may be quite possible, those who have done their PG programs long back, but they would like to update themselves. So for updation, they require only the completion of 1 or 2 courses. So for that also, this particular facility is helping them a lot. So school is endeavoring to experiment all the ideas
which are available in the national education policy, and they are working hard in this particular process. Today, we have received lots of insights by you all, and they all have noted down very carefully. And they will look into those issues carefully, and then they may also revise it, they may look into it, and even with your ideas, they can move ahead at a faster pace. Your benign presence today helped us to see that our programs, they are being launched and they're reaching to the larger number of people who are in the field of journalism. I once again compliment the school for taking such a great initiative, and that too in spite of the issues and the problems which we all have suffered during COVID. But still they all worked hard and shown the results to the university as a whole, and also to the discipline of journalism outside the university also. Thank you very much. Thank you. इग्नू के यशस्वी और लोकप्रिय माननीय कुलपति जी के प्रति विद्यापीठ अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके प्रेरणा के लिए, आपके सहयोग के लिए। अब मैं अपने कलीग डॉक्टर पद्मिनी जैन से अनुरोध करूंगा कि आज जिन अतिथि मीडिया एजुकेशन के जिन अतिथि जनों को हम लोग आमंत्रित करें हैं, आप सभी के प्रति, और जो हम लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और दूसरे मीडियम से जो राष्ट्रीय स्तर पर इसको सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबके प्रति, इग्नू परिवार के प्रति, शिक्षकों के प्रति, एकेडमिक्स के प्रति, सबके प्रति आभार प्रकट करने का डॉक्टर पद्मिनी जैन। My good afternoon to everyone present virtually and in reality with us. The process of offering gratitude is from the heart and from the heart of the entire school. I would like to thank our Honorable Vice Chancellor for guiding us through and for inspiring us to go through leaps and bounds to offer these programs. ये programs जो हम केवल ODL मोड में ऑफर कर रहे थे, इनको आज ऑनलाइन में, जो हम केवल इंग्लिश में ऑफर कर रहे थे, इनको हिंदी, तमिल और आगे हमारी कोशिश रहेगी और भी रीजनल लैंग्वेजेस में ऑफर करने के लिए जो प्रोत्साहन और जो सहयोग हमारे माननीय कुलपति महोदय ने हमें प्रदान किया, उसके लिए मेरा बहुत-बहुत आभार। On the behalf of the entire school, I would also want to thank the director, our senior professor, Professor Shambhunath ji, all my colleagues, Professor Deval, Dr. Shikha Rai, Dr. Ramesh Yadav, Dr. Amit, and all the staff of the school. हमारे स्कूल में रवि, प्रदीप, सुनीता, अमित, बहुत लोग हैं जिनका सहयोग मिले बिना हम इतने बड़े-बड़े स्टेप्स बिल्कुल भी उठा नहीं सकते थे। और हम सब की ओर से आज जो एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने अपना आशीर्वचन हमें दिया, प्रोफेसर आर्या, प्रोफेसर रविंद्रन, प्रोफेसर आनंद, आप सब हमारे लिए सीनियर्स हैं। आपसे हमने पर्सनली एज स्टूडेंट भी हमेशा बहुत कुछ सीखा है। Today on behalf of my entire school and university, I would like to express our gratitude for guiding us through, for sparing your valuable time, in joining us, in inspiring us again. Everybody who has joined us, and of course, हम ये regional languages में बिल्कुल ऑफर नहीं कर सकते थे जब तक बहुत सारे regional experts हमारे साथ ना जुड़ते। Machine translation पे हमने बहुत rely किया, लेकिन बहुत सारी human intervention, all the experts in Hindi and Tamil who have helped us at a very fast pace to do the vetting of the content, which I would say was a very tedious task. बहुत बार मशीन बहुत गड़बड़ चीजें भी लिख देती है, मीडिया प्रैक्टिशनर को मीडिया चिकित्सक लिख देती है, लेकिन कैसे हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने हमारा सहयोग दिया इस सब की वेटिंग करके, इसको प्रॉपर ट्रांसलेशन करके हमारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए। एंड ऑनलाइन वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द सपोर्ट ऑफ EMPC and COA, which is the Center of Online Education in IGNOU. With the guidance of our Vice Chancellor, all the divisions have worked in unanimity to provide these programs to our learners. और बहुत सारा आभार हमारे उन लर्नर्स के लिए भी जो फिर हमें इंस्पायर करते रहते हैं नई नई चीजें करने के लिए। All the hard work that we put in is for you. Thank you for joining us through YouTube, through Facebook, all the directors of the school, all the staff of the IGNOU who has again been a collaborator in doing all this. SOJMF extends warm gratitude and huge thank you to all of you. Thank you.
Now, with the permission of Honorable Vice Chancellor IGNOU, I request your permission, sir, to close the function. Thank you all very much for joining us today. Namaskar.